Okay, so now so good morning, everybody is there. जो लोग नहीं है प्लीज उनको हिलाओ यार. 3 लोग एब्सेंट है अभी भी. किधर है, कौन कौन एब्सेंट है? हाय सानिया, हाउ आर यू? बेटर सर. गुड. अरे काय सारखे सारखे आजारी पडते तू? स्वप्नील आला. स्वप्नील आलाय. बालचंद्र कुठे गेला? झोपला का परत? लेक्चर फिजिक्सचा कॅन्सल झालं. Okay, so let us start now. Those who are absent, please communicate with them. So the first thing जो हम लोग अभी देखेंगे that is structure of glucose. एक बार वापस समझा रहा हूं मैं. और जो स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं वो है, उसको बोलते हैं हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला. मतलब हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला में हम लोग कंसीडर करते हैं इट्स अ स्ट्रेट चेन, मतलब फ्लैट स्ट्रक्चर, फ्लैट साइक्लिक स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे. Now why this is happening ये भी मैं एक बार वापस एक्सप्लेन करता हूँ. कैसे होता है कि ये है कार्बोनिल ग्रुप और जब उसमें अल्कोहल हम लोग रिएक्ट करते हैं तो देयर विल बी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. देयर विल बी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. ओके, so that there is a formation of a structure, we call it as what? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेमीएसिटल और हेमिकेटल or hemikettle. So in this structure we are mainly focusing on this part. Now yesterday I also explained you why glucose has to consider, or in glucose we have to consider the cyclic structure. Some of the properties of aldehydes are not shown by glucose. What are those properties? It does not react with NaHSO3. Okay, it does not react with Gibbs base, Gibbs reagent. मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट है और 2,4-DNP के साथ ये टेस्ट नहीं देता. तो ग्लूकोज में अल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है तो ये अल्डिहाइड के कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट ग्लूकोज ने देने चाहिए बट वो नहीं देता, व्हिच मींस ग्लूकोज में we do not have open structure. The aldehyde group is not free. It is freed only when we are adding some acid or some base. इसका मतलब वहां पे रिंग ओपनिंग हो रहा है. जैसे फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट है, सिल्वर मिरर टोलेंस रिएजेंट टेस्ट है, उसमें हम लोग अल्कली मीडियम यूज करते हैं, अल्कलाइन मीडियम यूज करते हैं. तो अल्कलाइन मीडियम में रिंग ओपन होने के बाद aldehyde gives red precipitate with Fehling solution and silver mirror with Tollens reagent. Therefore, glucose is called as a reducing sugar. So, in alkaline medium, ring opening is taking place. तो अभी हम लोग वही स्ट्रक्चर ड्रॉ करने जा रहे हैं. ठीक है, एक बार पहले मतलब मैं हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला कैसे ड्रॉ करना है वो मैं समझा रहा हूँ. So first of all I am writing C, the double bond O H. Okay, aldehyde group first carbon, right? Then आता है C, the second one is again C, next one again C. Then we have देखो कितने कार्बन हो गए, देखो 1 2 3 4 5, fifth carbon, and then the sixth carbon I am writing CH2OH. और मैंने ये बताया था कि whenever we are, मतलब ग्लूकोज का जो फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला है, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में अगर जो OH राइट साइड में है उसको हम लोग नीचे लिखेंगे और जो OH लेफ्ट साइड में है उसको हम लोग किधर लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे. तो ये फर्स्ट कार्बन हो गया, ये सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, नंबर करो, नंबर हमेशा 4 कार्बन, 5th कार्बन एंड 6th कार्बन.
So we have a OH here, H here. थर्ड में OH ऊपर है, H नीचे है, इधर OH नीचे रहेगा, H इधर रहेगा, और यहाँ पे भी वैसे ही रहेगा, ओके OH नीचे ही रहेगा, है ना। तो इसको मैं ऐसे लिख देता OH और यहाँ पे H रहेगा। सो फॉर सेक ऑफ आवर कन्वीनियंस मैं लिख रहा हूँ ऐसे OH और यहाँ पे होगा H, ठीक है। अभी देखो क्या होगा यहाँ पे, मैंने क्या बताया, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ हेमिएसिटल। कैसे, ये फिफ्थ कार्बन पे जो OH है उसके लोन पेयर इस कार्बन पे जाएंगे and this hydrogen shift over here. So now we have two possibilities of structure. एक possibility देखो अभी ये जुड़ गया ना ये, that means now we have a six membered ring including six membered heterocyclic। heterocyclic का मतलब क्या हो गया, उसमें कार्बन के अलावा एक और हेटेरो एटम प्रेजेंट है और यहाँ पे कौन सा है, वो ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है। समझ में आया, ये देखो ये है फर्स्ट कार्बन, जो नंबर है वही फॉलो करो, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और यहाँ पे है नंबर 6 CH2OH। एंड बाकी जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर जैसा है उसमें कुछ चेंज नहीं हो रहा है, द चेंज इज हैपनिंग इन फर्स्ट एंड फिफ्थ कार्बन ओनली, ओके। ये OH और यहाँ पे H, try to understand this, OH and H, OH and H, very good। अभी इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद ये देखो एनोमेरिक कार्बन हो गया, ये एनोमेरिक मतलब न्यूली फॉर्म कायरल सेंटर। स्वप्निल, कायरल सेंटर का मतलब चार वैलेंसी अलग अलग रहेंगे ना, इधर नंबर 1 कार्बन इज नॉट कायरल बिकॉज इट इज बॉन्डेड विद 2C डबल बॉन्ड O, इसलिए यहाँ पे होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आएगा OH ग्रुप नया आ रहा है ना OH। अभी वो किधर आएगा, लेफ्ट साइड में भी हो सकता है और राइट साइड में भी हो सकता है, तो ये राइट साइड में मैंने लिखा, तो ये नया कायरल सेंटर बना। दिस कायरल सेंटर इज कॉल्ड एज एनोमरिक कार्बन। क्या बोलते इसको, एनोमरिक, एनोमर, एनोमरिक का उसका मीनिंग मुझे नहीं पता, एनोमरिक कार्बन। और ये पायरानोज रिंग स्ट्रक्चर है, इसका नाम देखो क्या होगा, द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज अल्फा डी ग्लूकोज, ये बोल सकते हैं हम लोग, और अल्फा डी ग्लूको पायरानोज, अल्फा डी ग्लूको पायरानोज। समझ में आया। Similarly, I can draw a structure same way। देखो same way structure draw करना है। Try to understand the similarities। और ऐसे ही हम लोग structures को याद रख सकते हैं। फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन। Don't forget this to number it, हाँ। CH2OH और ये हो गया H यहाँ पे, है ना। बाकी सेकेंड, थर्ड और फोर्थ में कुछ चेंज नहीं है। OH, कार्तिक, H, गुड मॉर्निंग, OH, H, OH एंड H। अभी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा, क्या होगा यहाँ पे, OH ग्रुप किधर जाएगा अभी, लेफ्ट साइड में मतलब ऊपर, तो ये क्या हो गया, कायरल सेंटर ही है। सो ये दोनों कार्बन, दोनों ग्लूकोज स्ट्रक्चर्स, they are differing only at first carbon, remaining structure is as it is। This is called as beta D glucose or beta D glucopyranose। Pyranose is a six membered heterocyclic ring, pyranose। और ये क्या है, ओपन स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज। समझ में आया सबको, एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट। अभी समझ में आया कैसे ड्रॉ करना है, जैसे मैंने बताया वैसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करो।
Yes, done everybody. Hello. हो गया क्या? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now let us understand the structure of fructose. जैसे हम लोग one by one see reaction सिर्फ हम लोग को ग्लूकोज के देखने हैं और almost all carbohydrate give same kind of a reaction. Okay. बट स्ट्रक्चर हम लोग कुछ मोनोसैकेराइड, अभी दो मोनोसैकेराइड्स हम लोग, तीन मोनोसैकेराइड के स्ट्रक्चर्स हम लोग देखेंगे, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड गैलेक्टोज. ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड गैलेक्टोज के हम लोग हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला वाले स्ट्रक्चर देखेंगे. ओके. एंड देन डाइसैकेराइड देखेंगे. ओके. चलो देखो अभी. सो लेट अस अंडरस्टैंड नाउ स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज. फ्रुक्टोज इज अ फंक्शनल आइसोमर ऑफ ग्लूकोज, है ना, क्योंकि उसका फॉर्मूला भी वही है, C6H12O6. ओके. कोक, स्प्राइट, मतलब जितने भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है उसमें ये बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा. एंड डेफिनेटली इट हैज अ प्रॉब्लम ऑन अ ह्यूमन बॉडी. सो अब ये स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे देखो हम लोग, हाउ वी आर एक्चुअली फॉर्मिंग अ स्ट्रक्चर. फ्रुक्टोज इज अ कीटोहेक्सोज. कीटोहेक्सोज. सो आई होप यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ कीटोहेक्सोज. मतलब इसमें क्या है, कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है. तो पहले मैं वो फिशर वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ. हाँ, हियर आई एम ड्राइंग अ फिशर स्ट्रक्चर. तो यहाँ पे कार्बन है. डी फ्रुक्टोज के बारे में हम लोग बात करें. डी फ्रुक्टोज मतलब जो लास्ट कायरल कार्बन है. अभी इसमें कितने कायरल कार्बन है जरा बोलो. हाउ मेनी कायरल कार्बन प्रेजेंट ओवर हियर? कुलकर्णी, Yes, sir. अंकल का, हाउ मेनी कायरल कार्बन प्रेजेंट ओवर हियर? 3. 3. Very good. So D fructose. So on last chiral का, so number 1 यहाँ से होगा, because कार्बोनिल ग्रुप को हम लोग क्या करेंगे, प्रेफरेंस देंगे. 3, 4, 5 and 6. So D fructose मतलब फिफ्थ कार्बन का OH राइट साइड में, ये भी राइट साइड में, ये जाएगा लेफ्ट साइड में. इज दैट क्लियर? ये है स्ट्रक्चर ऑफ डी फ्रुक्टोज. डी फ्रुक्टोज. अगर मुझे लिखना है हावर्थ प्रोजेक्शन लिखना है तो मैं ऐसे लिखूंगा, C double bond O, okay, and we have CH2OH on this side, and here also CH2OH. This is number 1 carbon, number 2, number 3, number 4, number 5, number 6. So थर्ड कार्बन का OH है लेफ्ट साइड में, इसलिए वो आएगा ऊपर और ये नीचे आएगा. फोर्थ कार्बन का OH है राइट साइड में, so ये नीचे आएगा H, and here also we have a OH and H. For sake of convenience I'm writing this way. यह है डी फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डी फ्रुक्टोज. दोनों भी स्ट्रक्चर डी फ्रुक्टोज के ही है. So नीचे मैं लिख देता हूँ डी फ्रुक्टोज. Now see what is happening over here. क्या होगा अभी यहाँ पे, ये जो फिफ्थ कार्बन का OH है ना, ये आएगा इधर और ये हाइड्रोजन किधर जाएगा, O के पास. Now if you join this, मतलब जैसे यहाँ पे है, ये H इधर जाएगा और ऑक्सीजन इधर सेकेंड कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा. So now if you draw a structure, see what kind of a structure I am getting. So this is CH2OH. Okay.
So this is for there is a formation of OH, है ना, OH बनेगा और यहाँ पे CH2OH and here we have a cyclic structure. Correct. Next one is OH here, H here. Now if you see here, how many, मतलब ये जो हेट्रोसाइक्लिक स्ट्रक्चर बना कितने मेंबर का है ये, 1 2 3 4 and 5. So it has a 5 membered ring. 5 membered ring मतलब ऐसे होगा, O, हाँ, it's very easy to draw the structure. Okay, ऐसे होगा, इसको बोलते हैं फ्यूरेन, फ्यूरेन, फ्यूरन. ओके, सो यहाँ पे अभी OH राइट साइड में आ गया, तो OH नीचे लिखा मैंने. सो ये जो कार्बन है, this carbon I call it as the second carbon, third carbon, fourth carbon, fifth carbon. Is that okay? Now here the OH इधर आएगा नीचे, नया वाला कायरल कार्बन, मतलब ये एनोमरिक कार्बन हो गया अपना, राइट. एंड देन वी हैव CH2OH. देन थर्ड कार्बन पे क्या होगा, OH ऊपर, H नीचे. फोर्थ कार्बन पे OH नीचे, H ऊपर, और यहाँ पे H नीचे, CH2OH. अंडरस्टूड. इसको हम लोग बोलेंगे अल्फा डी फ्रुक्टोज और अल्फा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोज. अल्फा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोज, ये लिख नहीं पा रहा हूँ, फ्यूरानोज. Here I am writing, this is alpha D fructose और ये है और अल्फा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोज. फ्यूरानोज क्यों? बिकॉज इट हैज अ फ्यूरेन स्ट्रक्चर. अंडरस्टूड. तो वैसे ही अभी लेफ्ट साइड में बनाएंगे हम लोग, है ना. OH ग्रुप किधर आएगा, लेफ्ट साइड में. कैन यू फॉर्म दैट, कैन यू मेक द स्ट्रक्चर? यस, प्लीज डू इट.
Yes, done everybody. Hello. हो गया क्या? Yes, sir. हाँ, will you able to draw the structure? सिर्फ यहाँ पे OH ऊपर जाएगा, CH2H नीचे जाएगा, that's it. चलो एक स्ट्रक्चर, अभी ये टेक्स्ट बुक में दिया नहीं है स्ट्रक्चर अपने को, बट विच विल बी हेल्पफुल टू यू while writing the structure of lactose. ओके, तो अभी ये जो है ये हम लोग देख रहे हैं गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर. गैलेक्टोज, गैलेक्टोज इज अल्डोहेक्सोज. अल्डोहेक्सोज, इसका भी फॉर्मूला C6H12O6 ही है, बट इसमें एक स्लाइट चेंज है. What is that change? You are going to tell me that change. Okay. So मैं पहले ओपन स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं इसका, ऐसे यहाँ पे so CHO, CH2OH. Okay, then there are 4 chiral centers. So as I already told you, first number it. नंबर कहाँ से करेंगे? अल्डिहाइडिक कार्बन से. नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 एंड नंबर 6. D, तो OH, डी गैलेक्टोज, मतलब ये हो गया डी गैलेक्टोज. ओके, OH. ठीक है, अभी तो ध्यान से देखना यहाँ पे कैसे होगा स्ट्रक्चर. सेकेंड कार्बन पे OH रहेगा राइट साइड में, H. थर्ड OH लेफ्ट साइड में. ओके, एंड द फोर्थ OH is also present on the left side. See the difference. So difference is only glucose और galactose में स्ट्रक्चर में फर्क किधर है? इधर. Therefore जब ऐसे फर्क होता है कार्बोहाइड्रेट्स में, then in that case glucose and galactose are, they are isomers. उनको बोलते हैं एपीमर्स ऑफ ईच अदर. क्या बोलते हैं इसको? एपीमर्स ऑफ ईच अदर, राइट. तो अगर इफ आई हैव टू राइट दैट स्ट्रक्चर, पावर प्रोजेक्शन वाला लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा? C डबल बॉन्ड OH, ये फर्स्ट कार्बन हो गया. then we have a CH2, sorry, second carbon, third carbon, fourth carbon, right? 1 2 3 4 5. We have here CH2OH, OH इधर आएगा, H. So first carbon, second carbon पे OH किधर है? नीचे. So OH. थर्ड कार्बन पे OH किधर है? लेफ्ट में है, तो राइट इधर जाएगा. फोर्थ कार्बन में OH भी लेफ्ट में है, तो ऊपर ही आएगा. समझ में आया फर्क? देखो किधर है वो. दिस इज योर डी गैलेक्टोज. लिखो अभी बाकी स्ट्रक्चर लिखो, अल्फा बीटा सब कुछ. कम ऑन डू इट.
चलो हो गया. यस, अल्फा बीटा भी ड्रॉ करो. आ जाएगा ना अल्फा बीटा. हेलो, हो गया सबको? सब समझो का हो गया? Yes, sir. Okay. Now, one more thing I want to add here. I hope everybody has done this part. एक हम लोगों ने ये देखा था, what do you mean by reducing? अभी reducing sugar और non reducing sugar मैंने बताया था क्लासिफिकेशन के टाइम. reducing sugar and non reducing sugar. Now reducing sugar जो है ना, reducing sugar reduces failing solution to give red precipitate, while non reducing sugar does not reduce failing solution. Okay, reducing sugar gives silver mirror with tolerance reagent. Silver mirror with tolerance reagent. Okay, while non-reducing sugar does not give silver mirror. No silver mirror with tolerance reagent. Okay, now अभी ये तो लैब वाले टेस्ट है ना, बट अगर समझो मुझे स्ट्रक्चर दिया है और मुझे आइडेंटिफाई करना है, तो यहाँ पे एनोमरिक OH is free. In non-reducing sugar, anomeric OH is not free. फिर ये क्या है बताता हूं. पहले ये तीन स्ट्रक्चर्स को देखो, तीनों स्ट्रक्चर्स देखना. यहाँ पे देखो, ये अपना एनोमरिक OH है ना, देखो ये OH फ्री है. ग्लूकोज में देखना, ये एनोमरिक OH है पिंक वाला, फ्री है ना, ये फ्री. मतलब यहाँ पे रिंग ओपनिंग पॉसिबल है इन अल्कलाइन मीडियम. सेम इज विथ गैलेक्टोज, सेम इज विथ गैलेक्टोज. समझ रहे हो? ओके, तो रिड्यूसिंग शुगर में मिनी एग्जांपल्स आते हैं. एग्जांपल ग्लूकोज, फ्रुक्टोज. फ्रुक्टोज भी है, इवन इफ इट हैज अ कीटोन. मैंने क्या बताया, एनोमरिक OH फ्री होना चाहिए, राइट? So in alkaline medium there is a rearrangement take place and the ketonic group is converted into aldehyde group. So fructose is also reducing sugar even if it contains ketone. याद रखना. Galactose, maltose, lactose, ये सब reducing sugar. और non reducing sugar, for us we have only one example,
and that is nothing but sucrose. Okay, just write down everything. इसके ऊपर एमसीक्यूज में क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिड्यूसिंग शुगर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं. Let us draw the structures of some disaccharides. Okay, so first disaccharide which we are going to discuss, our production formula हम लोग ड्रॉ करेंगे. सुक्रोज. सुक्रोज का फॉर्मूला है C12H22O11. C12H22O11. Sucrose on hydrolysis, okay, acid hydrolysis gives you glucose and fructose. समझ रहे हो? अच्छा, अभी मैं सिर्फ ये बताने जा रहा हूं, इसका जो अल्फा होता है इस सॉल्यूशन का, वो होता है पॉजिटिव, और जब मैं इसको हाइड्रोलाइज करूंगा तो ये दोनों का कंबाइन मिला के, क्योंकि वो एक ही सॉल्यूशन में रहेंगे ना, ये अल्फा हो जाता है नेगेटिव, मतलब रिवर्स हो जाता है ना. देयरफॉर सुक्रोज इज आल्सो कॉल्ड एज इनवर्ट शुगर, also called as invert sugar. Invert sugar, inversion is taking place there. शुगर, सुक्रोज को केन शुगर भी बोलते हैं, केन शुगर भी बोलते हैं. केन शुगर में बेसिकली ये होता है. ओके, केन शुगर. सो अभी ग्लूकोज का, सॉरी, सुक्रोज का स्ट्रक्चर क्या होता है वो ध्यान से सुनो. सुक्रोज कंसिस्ट ऑफ अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज and beta D fructofuranose linked by 1,2 linkage. मतलब मैं बताता हूँ क्या मीनिंग है इसका. ग्लूकोज का होता है 1 अल्फा डी ग्लूको, और ये होता है 2 बीटा डी फ्रुक्टोज. ये दोनों को मिला के क्या बनता है? सुक्रोज. तो मैं पहले ड्रॉ करता हूं क्या स्ट्रक्चर, अल्फा डी ग्लूकोज का, 1 अल्फा डी ग्लूकोज का मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं. तो ये नंबर 1 है, नंबर 2, पहले नंबर 2, 3 4 5. इट्स अ ट्रिक. अगर तुम लोग ऐसे डायरेक्ट स्ट्रक्चर देखोगे ना, तुम लोग डर जाओगे इन स्ट्रक्चर्स. बट अगर तुम लोग को ये टेक्निक्स पता है कैसे ड्रॉ करना है, दीज आर वेरी सिंपल स्ट्रक्चर.
ओके, तो ये ऐसे ड्रॉ करो, हो गया। उसके बाद फर्स्ट कार्बन को छोड़ दो, मैं सेकंड कार्बन OH किधर है, राइट में, थर्ड कार्बन OH ऊपर है, फोर्थ कार्बन OH नीचे है, यहाँ पे H और यहाँ पे क्या होगा, CH2OH। अंडरस्टूड, एवरीबॉडी गॉट द पॉइंट? यस, ये वन अल्फा डी है ना, तो OH नीचे रहेगा यहाँ पे और H ऐसे रहेगा। अभी फ्रुक्टोफ्यूरानोस, फ्रुक्टोफ्यूरानोस का स्ट्रक्चर क्या है, ऐसे है। और वो कैसा स्ट्रक्चर है, देखो यहाँ पे होगा, ये है नंबर 1 CH2OH, नंबर 1 याद है ना, 2 3 4 5 and here we have a CH2OH 6 H। अभी मैंने क्या बोला, 2 बीटा, बीटा मतलब OH किधर आएगा, ऊपर आना चाहिए ना OH, तो यहाँ पे मैं करेक्शन करता हूँ, तो OH आएगा इधर और CH2OH आएगा इधर, है ना। उसके बाद थर्ड कार्बन का OH किधर है, थर्ड कार्बन का OH ऊपर रहेगा OH, ओके। फोर्थ कार्बन का OH नीचे रहेगा OH एंड H। अंडरस्टूड, यस। अभी जो लिंकेज बनेगा, वो लिंकेज किसके बीच में है, 1 अल्फा, मतलब ये 1 कार्बन है ना, तो ये 1 और इसका बीटा 2 बीटा, मतलब ये O आएगा, समझ में आया, सिर्फ ये चला गया, सो H2O चला गया, ये दोनों के बीच में जो H2 है वो चला गया, so I'll draw with a different line। तो ये देखो, दिस इज O, HOH चला गया, सो नाउ क्या होगा, देखो यहाँ पे ये आ गया लिंकेज। नाउ देखो, ये फर्स्ट कार्बन एनोमरिक था जिसका OH अभी फ्री नहीं है, सेकंड कार्बन एनोमरिक था जिसका OH फ्री नहीं है, मतलब इस पूरे स्ट्रक्चर में एनोमरिक OH फ्री नहीं है, therefore it is called as what, non reducing sugar, no free anomeric OH, therefore it is non reducing sugar. It is what, non reducing sugar. Is that clear, all of you? Yes, हाँ, तो ग्लूकोज को ये मतलब इन सुक्रोज, व्हाट इज द C1 of alpha D glucopyranose is linked with C2 of beta D fructofuranose. Draw the structure, come on fast, draw the structure, all of you. एवरीबॉडी अंडरस्टूड कैसे ड्रॉ किया स्ट्रक्चर, किसी को डाउट है यहाँ पे, एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट, कोई बोल ही नहीं रहा है। No, sir.
चलो स्ट्रक्चर ड्रॉ हो गया. Try to understand the technique how to draw the structure. Chalo. Now let us go for the next disaccharide. And that next disaccharide is maltose. Okay. Next disaccharide is maltose. Maltose is actually made up of two glucopyrano structure. Okay. देखो क्या लिखा है. In maltose, C1 of alpha D glucopyranose is linked with C4 of beta D alpha D glucopyranose. Okay, C1 of alpha D glucopyranose is linked with alpha D glucose, मतलब C4 of alpha D glucopyranose. That means in maltose we have 1,4 alpha glycosidic bond. Glycosidic bond means, I told you what do you mean by alpha glycosidic bond. So one alpha D glucopyranoside, alpha alpha. Okay, so see the structure. तो पहले हम लोग किसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे. अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज का स्ट्रक्चर, दो मॉलिक्यूल्स ना. सो आई एम ड्राइंग दैट स्ट्रक्चर. ये पहले स्ट्रक्चर पायरानो स्ट्रक्चर ये ड्रॉ करो. ये भी पायरानो स्ट्रक्चर है ना. वेरी गुड. उसके बाद नंबर करो 1 2 3 4 5 और यहाँ पे आएगा CH2OH. कार्तिक नंबर 1 2 3 4 5 और CH2OH. करेक्ट. ओके. अभी फर्स्ट कार्बन अल्फा. अल्फा मतलब OH आएगा इधर. ये भी अल्फा है तो OH आएगा इधर. समझ में आ रहा है. उसके बाद सेकेंड कार्बन का OH किधर होगा. राइट साइड में ही है. थर्ड कार्बन का OH किधर आएगा. लेफ्ट साइड में है. फोर्थ कार्बन का OH किधर है. राइट साइड में है ना. यहाँ पे भी सेम स्ट्रक्चर है सेम, बट ये डाइसैकराइड, ये याद रखना. ओके. यहाँ पे आएगा OH और H and here we have OH and H. Is that clear? Now the linkage is actually between first carbon of one and fourth carbon of other, right? So we have a structure like this way. ये देखो ये आएगा O यहाँ से गया और H2 मतलब ये लिंकेज तैयार हो गया है ना. 1,4 लिंकेज 1,4. अभी ये एनोमरिक है और इसका एनोमरिक देखो ये इधर है. ये एक पूरा मॉलिक्यूल है ना. तो इसका मतलब इस पूरे मॉलिक्यूल का ये एनोमरिक कार्बन क्या है. फ्री है. नाउ सिंस एनोमरिक OH इज फ्री. समझ में. फ्री का मतलब समझ में. इट इज नॉट इन अ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज. ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड में नहीं, जैसे सुक्रोज में था वैसे इधर नहीं है. सो एनोमरिक OH इज फ्री. Therefore maltose is reducing sugar. Understood? Reducing sugar मतलब ये रिंग यहाँ से ओपन हो सकता है और ओपन हो गया तो अल्डिहाइड बनेगा. अल्डिहाइड बना तो वो क्या फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट देगा, है ना. लिख लो स्ट्रक्चर माल्टोज का.
draw the structure of lactose also. मैंने उधर underline किया है. Do it fast. संदेश येत आहे का ड्रॉ करता? हो सर. Yes. So I'm just showing the structure of, इसका ड्रॉ करेंगे हम लोग. अभी लैक्टोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे. तो लैक्टोज में पहले क्या आएगा? यस, व्हाट इज दैट?
गैलेक्टो, है ना। और दूसरा क्या आएगा? अच्छा पहले ये बताओ मुझे, रिड्यूसिंग शुगर है या नॉन रिड्यूसिंग शुगर है? हेलो, reducing. रिड्यूसिंग शुगर है, वेरी गुड। ठीक है, इसके बाद this is number 1, number 2, 3, 4, 5 and CH2OH। बीटा, बीटा मतलब, बीटा मतलब OH इधर आएगा, लेफ्ट साइड में आएगा। सो OH इधर, H इधर, उसके बाद OH इधर, थर्ड में OH ऊपर, और गैलेक्टोज में OH ऊपर ही होगा, है ना। इधर कैसे होगा? फर्स्ट कार्बन बीटा, सो OH ऊपर, H, then we have OH। ये क्या है? ग्लूको है ना, ग्लूको। सो यहाँ पे OH ऊपर, here we have यहाँ पे OH नीचे आएगा, यहाँ पे H आएगा, here we have a H and then we have a CH2OH and H। अभी this O and this O join together, so ये स्ट्रक्चर होगा ऐसे। now ये anomeric कार्बन फ्री है, therefore this is what? Reducing sugar। Everybody understood? Yes। एक मैं स्ट्रक्चर देके रखता हूँ, तुम लोग उसको घर पे ट्राई करना। ओके, दैट इज सेलोबायोस। सेलोबायोस, सेल्यूलोज का स्ट्रक्चर पॉलीमरिक फॉर्म ये हो जाता है सेलोबायोस। ये स्ट्रक्चर सबका, कितने लोगों का करेक्ट आया है ये स्ट्रक्चर लैक्टोज का? हाउ मेनी ऑफ यू आर द करेक्ट वन? अमृता? Yes. Hello. मानसी? Yes, sir. सावली करेक्ट आला का? सोम आठवले? सामंत साहेब करेक्ट आला? एनीबडी गॉट रॉन्ग वन? और पवार साहब? Correct answer. गुड, वेरी गुड। चलो मैं एक अभी बता देता हूं, द नेक्स्ट स्ट्रक्चर ये तुम लोग ड्रॉ कर लेना, सेलोबायोस। ओके, सो व्हाट वी हैव टू रिमेंबर, लिंकेज किसके और किसके बीच में है वो याद रखना है, दैट्स इट। ओके, तो सेलोबायोस में ये लिंकेज है। इंटरेस्टिंगली ये दोनों भी बीटा, माल्टोज का बराबर उल्टा है। यहाँ माल्टोज में अल्फा था, यहाँ पे क्या है? दोनों भी बीटा है। सी ये कनेक्शन से याद रख सकते हो तुम लोग, यू हैव टू रिमेंबर दैट कनेक्शन। माल्टोज में अल्फा होता है और सेलोबायोस में बीटा होता है ना। सो ये होगा C1 ऑफ बीटा डी ग्लूकोज, C4 ऑफ बीटा डी ग्लूकोज एंड 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। जस्ट राइट इट डाउन, ये होमवर्क है, स्ट्रक्चर तुम लोग होमवर्क में ड्रॉ करो। आर्यन जी आगे आपको ये समझ में आया क्या? Yes. स्ट्रक्चर आपने सही से ही ड्रॉ किया या गलती की? सब माइनर मिस्टेक था. अरे यार माइनर मिस्टेक मतलब 0 मार्क्स ना बाबा यहाँ पे। Yes sir. चलो लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। ये लिख लो, और अभी हम लोग थोड़ा पॉलीसैकेराइड्स देखते हैं, पॉलीसैकेराइड्स। ओके, पॉलीसैकेराइड्स, just look at here, what are polysaccharides? These are neutral polymeric compounds in which, everybody can say this, large number of same or different monosaccharide units
linked together by glycosidic linkage. They have a general formula C6H10O5N, where N has very large value. They are colorless, tasteless, and insoluble in water. They are usually made up of pentoses or hexoses, which play a very important role in a plant and animal life as a food storage and structure role. Example: cellulose, starch, glycogen, dextrine, etc. Okay. Now, what do you mean by starch? It is the main storage polysaccharides of plant. मतलब एनर्जी स्टोरेज इज मेनली प्लांट में किसमें स्टोर करके रखते हैं हम लोग? स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट्स. ओके, which is also important part of a diet and is mainly found in cereals, grains, roots, tubers, corns, potatoes, etc. It occurs in the form of granules, which vary in size and shape depending upon their plant source. Starch is a white powder insoluble in cold water. I tell you, पुराने जमाने में ना वो कॉटन का जो कपड़ा होता था, प्योर कॉटन, उसको ना ऐसे स्टार्च करते थे. आई डोंट नो अभी करते कि मुझे पता नहीं, बट उससे ना वो ऐसे मस्त कड़क हो जाता है कपड़ा. ओके, दैट स्टार्च. Starch is kind of a flour only. On hydrolysis with a dilute acid or enzymes breaks down to a molecules of a variable complexity and finally gives D-glucose. So starch का basic structural unit क्या है? D-glucose. Starch is a non-reducing saccharide which do not reduce swelling solution or tolerance reagent. Starch is a polymer of अल्फा डी ग्लूकोज और इसके दो कंपोनेंट हैं. एक है अमाइलोज 20% एंड अमाइलोपेक्टिन 80%. ये सब एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है. Starch is used as a principal food storage of glucose energy. It is hydrolyzed by enzyme amylase present in a saliva whose end product is glucose, which is an essential nutrient. Amylose. अमाइलोज स्ट्रक्चर कैसे होता है हम लोगों को इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर. इट इज अ वाटर सॉल्युबल. अमाइलोज इज अ वाटर सॉल्युबल and constitutes 20% of the starch. It is a linear unbranched polymer of alpha D glucose. In amylose, around 200 to 1000 alpha D glucopyranose molecules are linked together by C1 of one and C4 of another. मतलब सेलोबायोस नहीं, माल्टोज का पॉलीमराइजेशन करो तो क्या मिलेगा? अमाइलोज मिलेगा. C1 C4 C1 C4 C1 C4 C1 C4 ऐसे. इज दैट क्लियर? अभी मैंने तुम लोगों को समझाया कि C1 C4 कैसे लिंक करना है. दिस इज कॉल्ड द अल्फा लिंकेज बिकॉज़ वो अल्फा एनोमेरिक कार्बन्स हम लोग कनेक्ट करें इसलिए. अमाइलोज. अमाइलोपेक्टिन में क्या होता है? अमाइलोपेक्टिन में वी हैव अ ब्रांच स्ट्रक्चर. 80% of starch is made up of this. In this case, alpha D glucopyranose molecules are linked together by glycosidic linkage between C1 and C4 unit to form a long continuous. मतलब ये होगा C1 C4 C1 C4, ये भी होगा C1 C4 C1 C4. Beside that, branching occurs by the formation of glycosidic linkage between C1 of one glucopyranose unit and C6 of other. मतलब एक ऐसा ट्रेन बनेगा. ये ट्रेन है, ये दूसरा ट्रेन है. ये दो ट्रेन का जोड़ने का काम ये करते हैं. C1 of one, C6 of other. तो ये दो चेन, स्ट्रेट चेन क्या हो गए? जुड़ गए. Amylopectin contain 1,4 alpha and 1,6 alpha glycosidic branch. Understood? Okay. So ये हो गया amylopectin, starch. Now cellulose. It is a long chain unbranched polymer. Cellulose mainly occurs in a plant. Animals में cellulose नहीं होता. Even animals have no
procedure or no enzyme which can digest cellulose. ये याद रखना. Cell walls of a plant cell is made up of cellulose. It does not reduce swelling solution and tolerance reagent. इसलिए it is not hydrolyzed so as starch, but on heating with a dilute sulfuric acid under pressure gives D-glucose. In cellulose क्या है देखो, beta D glucopyranose molecule linked by glycosidic linkage between C1 of one unit and C4 of another. बट ये बीटा है. जेई मेंस में एक बार ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था बहुत पहले, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट सेल्यूलोज. ओके, तो ये ऐसा क्वेश्चन देता है, तो क्या याद रखना है, बीटा C14 दैट्स इट. अंडरस्टूड. Cellulose is an essential important compound, industrially important compound. It is used in textile, paper, plastic. When it is treated with a wide variety of chemicals, it forms many useful products such as celluloid, rayon, gun cotton, and explosive, cellulose acetate, plastic and wrapping film, methyl cellulose, fabric sizing, paste and cosmetic, ethyl cellulose, plastic coats and film. समझ में आया? आई थिंक डिस्टिंग्विश की जरूरत नहीं है. ग्लाइकोजेन वगैरह तुम लोग से पढ़ो, मतलब उसको याद रखने की जरूरत नहीं है. इज दैट क्लियर? ओके, तो यहाँ पे अपना कार्बोहाइड्रेट्स खत्म हो गया. ये इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स तुम लोग पढ़ो, मतलब ये जनरल नॉलेज है, सो जस्ट रीड इट. अपने टेक्स्ट बुक में है तो पढ़ो. द नेक्स्ट पार्ट विच वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इज प्रोटीन्स. ओके, यस, एवरीबॉडी अंडरस्टूड द पार्ट? हाँ, अच्छा. कार्बोहाइड्रेट्स आर एक्चुअली कंपाउंड्स कंटेनिंग ऑक्सीजन. याद रखना, उसमें नाइट्रोजन नहीं था, सल्फर नहीं था, सिर्फ ऑक्सीजन था. बट प्रोटीन्स कंसिस्ट ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर. बेसिकली दे आर कंसिडर्ड एज अ नाइट्रोजनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड. नाउ प्रोटीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, एसेंशियल फॉर वेयर एंड टेयर, ग्रोथ, है ना. मतलब ऐसे बोला जाता है, फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग और एनी वी कैन, हाँ, ह्यूमन बीइंग इफ आई से, कितना प्रोटीन उसको लेना चाहिए, उसका जो वेट किलोग्राम में है, ओके, उतना ग्राम प्रोटीन इंटेक डेली होना चाहिए. मतलब फॉर एग्जांपल, इफ अ पर्सन हैज अ वेट ऑफ 60 kg, तो उसको 60 ग्राम प्रोटीन लेना है डेली. Now just ask yourself whether you are taking that much protein or not. To keep yourself, मतलब अपना ग्रोथ, हेयर फॉल रोकने के लिए और स्किन टेक्सचर के लिए, वियर एंड टेयर के लिए, उतना प्रोटीन हम लोग लेते या नहीं लेते. जस्ट आस्क क्वेश्चन दैट योरसेल्फ. द इंपॉर्टेंट प्रोटीन रिक्वायर्ड for our body are enzymes as a biological catalyst, biochemical reactions में, hormones, antibodies. अभी ये तो मुझे पता है, अभी antibodies तो ये वर्ड काफी फेमस हो गया है. ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, स्ट्रक्चरल प्रोटीन एंड कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन. ओके, what are proteins? Proteins are naturally occurring nitrogenous polypeptide which on hydrolysis give alpha amino acid. Please write down this. अच्छा, इनके नाम ऐसे ही है. There is no IUPAC name for this. तो अल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, केसीन, अल्ब्यूमिन कहाँ कहाँ होते हैं वो हम लोग देखेंगे. हाँ, सो ये जस्ट राइट डाउन दिस. अल्फा अमीनो एसिड का मतलब देखो, अगर ये NH2 को मैंने हाइड किया तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, उसके अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन रिप्लेस्ड बाय NH2, देन इट इज कॉल्ड द अल्फा अमीनो एसिड. सो राइट डाउन प्रोटीन का डेफिनेशन.
Done. Yes, sir. Now, what are the features of protein? They are essential for growth and maintenance of life. They perform a wide variety of biological functions. Proteins are the constituents of cells, therefore are present in all living bodies. The molecular mass of proteins are very high. Structurally, proteins are long polymers of alpha amino acid linked by peptide linkage. उधर क्या था? कार्बोहाइड्रेट्स में क्या था? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. यहाँ पे क्या है? पेप्टाइड बॉन्ड. देखो कौन सा है? CONN. ये सब MCQ वाले क्वेश्चंस हैं. All these are MCQ questions. Okay. Now, what are the products of hydrolysis of protein? So, structurally, proteins are long polymers of alpha amino acids. So, all proteins on partial hydrolysis gives you variety of products. Proteins on hydrolysis gives you peptides. Peptides on hydrolysis gives you alpha amino acids. Okay. Now, how there is a formation of peptide bond? देखो, two amino acids. This is one amino acid. This is another amino acid. So there is a loss of H2. Now ये जो मैंने बताया बहुत simple way है, but actually this is not as simple it is shown on a paper. मतलब देखो क्या है, सीक्वेंस वाइज ये एक अल्फा अमीनो एसिड है और ये दूसरा अल्फा अमीनो एसिड है, तो सीक्वेंस वाइज इसका CO और इसका NH ऐसे ही होना चाहिए, बट अगर रिवर्स हो गया तो क्या फर्क पड़ता है सर? यस, अगर रिवर्स हो गया तो सीक्वेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड चेंज हो गया. अगर सीक्वेंस चेंज हो गया ना तो पूरा फंक्शन चेंज हो जाता है प्रोटीन का. समझ रहे हो? तो इसलिए दिस इज डन, मतलब जब प्रोटीन्स लेबोरेटरी में वगैरह प्रिपेयर करते हैं, अ लॉट ऑफ केयर हैज टू बी कंसीडर और टेकन. ओके, क्यों? तो ये NH2 ग्रुप इसके साथ रिएक्ट हो सकता है, तो जो लिंक ये रहेगा, सीक्वेंस रहेगा, वो उल्टा हो गया. देयरफॉर ये NH2 को पहले प्रोटेक्ट करना है. अभी वो दिया नहीं यहाँ पे, NH2 को प्रोटेक्ट करना पड़ता है, ये COH को प्रोटेक्ट करना पड़ता है, फिर दोनों को रिएक्ट करना पड़ता है, फिर ये प्रोटेक्शन निकालना पड़ता है, तब जाके मुझे क्या मिलता है? प्रोटीन्स, मतलब पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन्स मिलते हैं. बट फॉर सेक ऑफ आवर कन्वीनियंस हम लोग सिंपलिसिटी से क्या लिखेंगे? देयर इज अ लॉस ऑफ H2O, OH फ्रॉम हियर, H फ्रॉम हियर. इज दैट क्लियर? यस, इट्स अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ही एक पार्ट है, so that we are getting CONH linkage. Understood? Two alpha amino acids combine to form a dipeptide. 3 रहेंगे तो ट्राइपेप्टाइड, 4 रहेंगे तो tetrapeptide, and so on. A polypeptide with a molecular mass more than 10,000 is termed as protein. ये लिख लो जरा. Write down this note. Complete.
Now, let us talk about the structure of alpha amino acid. So the name itself suggests alpha amino acid. मतलब NH2 group is present at alpha carbon atom. अभी इसमें स्ट्रक्चर में कैरेक्टरिस्टिक क्या है? COH ग्रुप एसिडिक है और NH2 ग्रुप बेसिक है. COH ग्रुप क्या है? एसिडिक है और NH2 ग्रुप क्या है? बेसिक है. ओके. Amino acids are crystalline, colorless, water soluble, non-volatile, high melting solids. Amino acids in their aqueous solution, मतलब neutral medium में, behave like a salt due to the presence of both acidic and basic group. मतलब in neutral medium यहाँ से प्रोटॉन इधर गया, ये बन जाएगा NH3 प्लस और ये हो गया CO माइनस. अगर तुम लोग को याद है फिनॉल में कार्बोक्सिलिक एनिलीन में हम लोगों ने ऐसा स्ट्रक्चर देखा. Okay, there are two ends in a molecule. One end is positive, other end is negative. That is called the dipolar ion or Zwitter ion. The carbon atom adjacent to carboxylic acid is called the alpha carbon. वही जो मैंने अभी बताया वही यहाँ पे concept explain किया है. Okay, I want to explain you one more thing over here about the alpha amino acids. Just talk about alpha amino acid. ध्यान से देखना CH R यहाँ पे आ गया NH2 और यहाँ पे आ गया COOH. अच्छा, अगर मैं यहाँ पे एसिडिक मीडियम लूं, pH is less than 7, तो H plus will attack on this. So the protein or the alpha amino acid carries positive charge in acidic medium. अगर मैं pH बेसिक मीडियम लूं, बेसिक मीडियम, so pH is greater than 7, तो ये H plus OH minus के साथ अटैक करेगा. And now we have what? COO minus. मतलब in electric field this will go to the negative electrode, this will go to the positive electrode, but there is a one pH where this H plus goes over here, so that we are getting a neutral molecule which is not going, neither going to the cathode nor going to the anode. We call it as what? Dipolar ion, or it is also called as what? Zwitter ion. Okay, this pH is called as isoelectric point. This pH is called as what? Isoelectric. Iso मतलब same, electric point मतलब दो same positively charged, positive negative equal charges एक ही मॉलिक्यूल, मतलब ये neutral है. Understood? Yes. Please write down this part. Just put the heading Zwitter ion and isoelectric point. Electric point in amino acid. This is the heading. Complete this. Here we stop for today. We'll continue tomorrow. Most probably ये week में अपने ये chapter खत्म हो जाएगा. ठीक है? मतलब खत्म करना है अपने को. जिसको डाउट पहले कंप्लीट करो, जिसको डाउट है वो रुको मेरे साथ. Those who don't have, they can leave. Thank you very much.